Okay, good morning all. Can you hear me properly? Yes, sir. Okay. Okay. I have shared my screen. Can you see it? Yes, sir. Okay. Okay. Thank you. So, what we have seen in last lecture? Anybody can recall? We have seen the static and non-static method and how to recall them. Okay, and also the variables, right? We have seen the variables, types of variable like local, instance, and static variable. Okay. At the same time, I have shown you how to call the user defined non-static method, right, by using the object. And also the static, if the method is static, there is no need to create the object, we can directly call it by how we can call the static method. Can anyone able to tell? हम नॉन स्टैटिक या स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं? Last time. Class name. Okay. Okay. Okay, good. So today we are going to start the conditional statements. Okay. और इसको हम ये भी कहते हैं फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट. We can call it as a flow control statement also. Can anyone guess what is the meaning of this conditional or flow control? कंडीशन का मीनिंग क्या होता है? What is Sir, the meaning of condition? Yeah, conditional good. statements which we can give a condition if is true, then Hmm. execute that statement, otherwise not. Hmm. Okay, very good. Okay, good. Okay, again, what is the flow control? Any guesses? Flow control का मतलब क्या हो सकता है? Okay, no need. देखिए हम फ्लो कंट्रोल या कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों देखते हैं? ओके, फॉर एग्जांपल you are doing any manual testing. Guess you are doing any manual testing. For example, if you are just log into application, you are trying to log into application. Okay, for example, if you are trying to log into the application, now the condition is if this mobile number field or this email field is valid, then only you will get the message and you can feed the OTP, right? So here the condition is what? Until and unless your input is valid, you will not be landed or you will be not navigated to next page. इसका सिंपल मीनिंग है. कंडीशन यहाँ पे क्या है कि आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर की जो फील्ड है ये वैलिड चाहिए. ओके, इट शुड बी द वैलिड. और एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई आपको सर्च कर रहा है मोबाइल. ओके, इफ यू आर पुटिंग ब्लैंक वैल्यू एंड यू आर क्लिकिंग सर्च, we are not getting any result, right? We are not getting any result. So what is the condition here कि आपको इस सर्च बॉक्स में कुछ तो वैल्यू इनपुट देना है. ओके, at least some value you should give, like if you are giving mi mobile. Okay, if you are giving the mi mobile and then you are clicking on search, then only you will get some result. कंडीशन यहाँ पर क्या है कि आपके सर्च बॉक्स में कुछ क्या चाहिए? फील्ड चाहिए, कुछ लिखा हुआ चाहिए. अगर ये ब्लैंक है एंड इफ यू आर ट्राइंग टू क्लिक,
you will not get any result, right? तो ये है कंडीशन का मीनिंग इन रियल वर्ल्ड. ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड द कंडीशनल स्टेटमेंट. अब आपको इसका कोडिंग करना है. टू अंडरस्टैंड मैन्युअली इट्स वेरी इजी कि यहाँ पे फील्ड वैल्यू चाहिए तो ही हम क्लिक कर पाएंगे या क्लिक करने के बाद कुछ रिजल्ट आएगा. But in actual while coding, we have to give some instruction in coding language कि if there is some input, then only we can hit this button and we can get the result. So यहाँ पे कुछ condition हमको specify करनी है, but the same condition we should be specifying in the coding language. अब आपको coding language, okay? So majorly for conditional statement there are 4 types. Okay, there are 4 types. One which is very basic, if statement. Okay, if statement. I will make it as a if statement. Okay, next if else statement. Okay, then else if statement, and fourth one is the nested if. Okay, now one by one we will see the what is the exactly logic. Okay, okay, now first I want to see the if statement. If statement. Now see what exactly we can do with this if statement. देखिए आपको जब कोडिंग करेंगे आप तो उसका कोर कंटेंट में बताता हूँ. ओके, अगेन वी विल डू इन दी इक्लिप्स आल्सो. वी हैव टू टाइप इफ एज अ कीवर्ड. इफ ये कीवर्ड है, देन इन राउंड ब्रैकेट वी हैव टू गिव द कंडीशन. ओके, वी हैव टू गिव द कंडीशन. देन if body we are defining in the curly braces. Okay, here we have to give the whatever the statement we are giving, it will be get printed. So if here I will just simply say if statement executed. Any issue? Okay, and curly bracket close. Okay, so this is a core syntax we can say. ये जो है आपका, this is the core syntax for if statement. Okay, here we have to give the condition and then we have to give some statement. So यहाँ पे आप जो भी statement दोगे वो कब print होगा या कब execute होगा, when this condition is true. This condition which you have mentioned, this must be true. अब देखिए, for condition can be either true or false. दो ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा. ओके, कंडीशन आपकी एक तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. अब यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, इफ यू आर मेंशनिंग सम कंडीशन एंड देन मेंशनिंग दी बॉडी फॉर इफ. ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, अब आपका जब जेआरई होता है और एग्जांपल जावा में क्या होगा कि ये स्टेटमेंट पहले चेक होगा, ये कंडीशन जो आपने दिया है ये करेक्ट है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है. इफ इट इज ट्रू देन ओनली इस कर्ली ब्रैकेट में आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दी है वो एग्जीक्यूट होंगे. ओके, अगर ये फॉल्स है तो इफ स्टेटमेंट में आपका फॉल्स का जो भी है स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं होता है. मतलब फॉल्स का कुछ लिखा ही नहीं हमने, बस कंडीशन ट्रू है तो ही एग्जीक्यूट होगा. अगर फॉल्स है तो आपको आउटपुट मिलेगा ब्लैंक. यू विल गेट द आउटपुट एज अ ब्लैंक. इसमें किसी को डाउट है इन इफ स्टेटमेंट? Okay, now I will go here. I'll create one package. How to create package? I hope you are doing practice. Okay, otherwise it will be difficult. देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, create
we have created the package. Okay, now inside the package we can create a class. So new, go to this, create a Java class, click on this. First we will see the if statement, right? So if, it should be with capital if, if condition. Okay, I will just shortform the condition. So just click on finish, you will be getting the one class. Okay, this is your class, right? Anyone is unmute? Akshay, please mute yourself. Yes. Okay, we have created a class, right? The class name is if condition underscore condition. Whatever that you will give name, you will give same you will be getting. Now what is the next step? What we have to create? The main method. What is syntax for it? Public static void main. Public static void main, in the bracket capital S string args and the body for this method. Correct? So here we are inside the main method. This is the common syntax. Okay, there is no any great logic for this. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? What we have done? No, sir. Now here we are defining one variable. Int a is equal to 30. मान लीजिए. So which type of variable is this? ये कौन से टाइप का वेरिएबल है? Integer. Okay, that is a type, but it is local, it is instance, or it is static variable. Instance, sir. Instance. Okay. Local. Okay. देखिए आप ऐसा बेसिक भूलोगे तो आपका फिर आगे क्या होगा, बहुत डाउट आएंगे आपको. What is the instance variable? What is the definition of an instance variable? मैंने सिंपल बताया था. देखिए इंस्टेंस वेरिएबल होता है आपके इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द मेथड, एंड लोकल वेरिएबल होता है आपका इनसाइड एनी मेथड. सो void is a main is one type of method, so this should be the local variable for this main method. Okay, leave it. Now as of now what we have seen is हमने एक इंटीजर a जो वेरिएबल है वो क्रिएट किया है, उसको वैल्यू असाइन किया 30. we have assigned the value as 30 to that. Okay, now we have to see the if statement. तो मैं टाइप करता हूँ if small I f. See, the keyword is highlighted in like pink color, okay, or red color. Inside the bracket I have to give the condition. So I'm giving the condition as a less than or equal to 50. Now I'm just giving the condition may be whatever. Okay, condition कुछ भी हो सकता है. Then the curly bracket opening inside the if body. Inside the if body I want to say, I want to print something, that is if statement is executed. Okay, that is a simple syntax. देखिए if के लिए क्या मैंने कहा था, we have to give the if keyword, then condition, and inside the if body we are specifying or giving some instruction. तो मैंने यहाँ पे print instruction दिया है. Okay, here we are giving. Now what this will do is, first it will give it will go to line number 10. Here it will check कि a की जो value है
a की वैल्यू अब क्या है 30. So what it will check exactly? What it will check exactly in this line? That is a. That means what age की वैल्यू कितनी है 30. Is it लेस देन और इक्वल टू 15? क्या है ये, ट्रू है और फॉल्स है? इज इट ट्रू और इट इज फॉल्स? False. false, sir. फॉल्स. तो अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, राइट क्लिक, रन एज वन एप्लीकेशन, यू विल नॉट गेट एनी आउटपुट. आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा. यहाँ पे देखिए कंसोल में कोई आउटपुट दिख रहा है आपको? देयर इज नो आउटपुट. बिकॉज बस आप इफ स्टेटमेंट यूज करते हो एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट. तो अगर वो इफ स्टेटमेंट ट्रू है तभी आपको इफ में जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया था वो एग्जीक्यूट होगा. ओके. सिमिलरली, ओके, नाउ आई विल चेंज इट द वैल्यू फॉर दिस. ओके, नाउ I will make it as 40. Now this time, is it true or false? True, sir. Is it true? This time it is true, right? So here it is 40, and this time it is true. Now this time you will get this statement executed, like if statement is executed. If I'm right click, go on run as, click on one Java application. You can see the statement executed if you have condition satisfied or it is true. So यहाँ तक किसी को कोई डाउट है with this if statement? No, No, sir. sir. Okay, thank you. Okay, so this is if statement. देखिए if statement का मीनिंग है, यहाँ पर बस if के लिए ही बॉडी हमने दी है. अगर if कंडीशन ट्रू होती है, जो भी अपने कंडीशन सेटिस आपने यहाँ पे लिखी है, तभी if बॉडी में जो भी आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा. ओके. अगर if कंडीशन के बाद आपने जो भी कंडीशन सेटिस्फाई जो भी लिखा है वो अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपका आउटपुट नहीं आएगा. सिंपली द आउटपुट विल बी द ब्लैंक. ओके, द आउटपुट विल बी द ब्लैंक. फिर अगर आपके पास ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपको फेल्ड पार्ट के साथ भी कुछ एग्जीक्यूट करना है. फेल्ड पार्ट के साथ मतलब मान लीजिए आपकी कंडीशन फॉल्स होती है फिर भी आपको कुछ एग्जीक्यूट करना है. दैट टाइम यू विल यूज दी इफ एल्स कंडीशन आप यूज करते हो. ओके, दैट टाइम यू आर यूजिंग द सेकंड टाइप, दैट इज इफ एल्स. नाउ हियर व्हाट इज द syntax? Here we have to give the if. We have to give the if word keyword, then your condition. Okay, your condition. Then we are going to give the curly braces, and here simply the if statement get executed. Okay, यहाँ पर अगर कब, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन. ओके, बट मान लीजिए कि ये कंडीशन होती है फॉल्स, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं होती है, देन यू हैव टू टाइप द एल्स कीवर्ड, अगेन give the curly braces, and here we can see like else statement get executed. Okay, then curly braces close. ओके, बस यहाँ पे एडिशनल पार्ट क्या है कि आप फॉल्स होने के बाद भी जो भी आपका एग्जीक्यूशन होगा उससे भी आप ट्राई करना चाहते हो. यू वांट टू ट्राई विद दिस आल्सो, सो वी कैन ट्राई विद दैट आल्सो. ओके, हियर आई विल अगेन क्रिएट वन मोर क्लास. इट इज फॉर if underscore else condition. Okay, if or else. So we have created a class if or else condition. Okay, the class name is as it is what we have given while creating the class. Again the next syntax, what we have to type is
public void main, sorry, public static void main inside the bracket string args. Okay, so we have created the main method. We have created the main. Now here I want to again create one data, right? Like integer mark is equal to 60. मान लीजिए मैंने कोई इंटीजर बनाया है ना, उसका वेरिएबल नाम है मार्क और उसकी वैल्यू भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया 60. नाउ आई वांट टू वर्क विथ इफ एल्स कंडीशन. ओके, सो इफ माय कंडीशन, what is the condition? For example, mark, okay, mark, it should be equal to, it should be, we can say, for example, we are specifying one condition for passing. So passing की condition क्या है? आपके marks 40 चाहिए या 40 से ज़्यादा चाहिए. So mark should be greater than or equal to 40, right? Your mark should be greater than or equal to 40. Or yeah, here. Okay, now I will show you what error you are getting. Okay, now mark should be greater than or equal to 40 ये मेरी condition है. Then I am saying that student is passed. Okay, student is passed in subject. मान लीजिए ये मुझे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है. ओके, आफ्टर दिस अगर मान लीजिए इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, सो वी आर वर्किंग विद एल्स, फेल पार्ट जिसको हम कहते हैं. एल्स द स्टूडेंट इज फेल्ड इन द सब्जेक्ट, राइट. देखिए यहाँ पे मीनिंग क्या होता है. फर्स्ट इट विल चेक द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, जो हमने लाइन नंबर 6 में स्पेसिफाई की है, राइट. द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज 60. नाउ आई वांट टू चेक कि वो पास है या फेल है. सो आई एम गिविंग द कंडीशन मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40. तो वो स्टूडेंट होगा पास. मान लीजिए अगर वो 40 से लेस है, देन इट विल गो टू द एल्स पार्ट. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, if this condition is not satisfied, okay, then we are getting the else part. Okay, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इस लॉजिक में किसी को डाउट है? Whatever I have written it. No. Okay. अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए यहाँ पे? Just read the sentence again. Line number 9 और line number 6 से पढ़िए. And what we should get here? Student is passed in subject. Okay. See, marks की वैल्यू क्या हमने असाइन की है? 60. So it is checking as your 60 marks are greater than or equal to 40. So here condition is true. So it will execute just this body, whatever we have given in the true body, sorry, in if body. It will not go to else. It will not go to this. Okay. Now मान लीजिए कि आपके स्टूडेंट के मार्क हो जाते हैं 20. Now again it will come to this condition. It will check that this 20 is greater than or equal to 40. That time this condition becomes false, right. ये condition false होती है. So it will not go inside this if body. It will go to the else, and whatever we have written in else body, it will directly get executed. Okay. So here if we try to execute this, the student is failed in subject. Why? Because this condition is false here, or it is get failed. ये कंडीशन ही आपकी फॉल्स बनती है, तो फॉल्स होने के बाद वो इफ वाला कुछ भी पार्ट एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं. इट विल डायरेक्टली जंप टू द एल्स पार्ट. Okay, so what is the difference between
if and if else, कोई बता सकता है? इफ स्टेटमेंट में अगर checking. कंडीशन ट्रू है तभी वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज इट विल जस्ट गिव ब्लैंक आउटपुट। और इन इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ द कंडीशन इज ट्रू then it will print the if statement body. Good. Otherwise, or if condition is fail, then it will execute the else statement body. Okay. Good. Again. Got it? सभी को क्लियर है एग्जैक्टली व्हाट इज दिस इन इफ एंड व्हाट इज इफ एल्स? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? Okay, the one main thing you should be considering in this both, if statement और if else statement में हम बस एक ही कंडीशन को कंसिडर करते हैं. देयर इज ओनली वन कंडीशन आई हैव स्पेसिफाइड, राइट? मैंने कोई दो कंडीशन कभी स्पेसिफाई नहीं किया, आप देख लेना. आई हैव जस्ट गिवन वन कंडीशन ओनली इन बोथ हियर. सी, इन इफ कंडीशन मैंने बस एक ही बार कंडीशन स्पेसिफाई की है, एंड इन if else also I have given just one condition. I have given just one condition. Okay. मान लीजिए in your requirement you need to deal with multiple condition, more than one condition. अब आपके पास क्या है? एक ही कंडीशन नहीं है, आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है. So do you have any example of multiple conditions? 60% से ऊपर हो तो फर्स्ट क्लास, 60% से नीचे हो तो सेकंड क्लास. Okay. Okay. उससे नीचे और 50 से नीचे हो तो सी ग्रेड. Okay. 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 So I will make it very simple here. Okay. I will show you first what exactly in this else if statement. Okay. Here we are giving first if condition. Okay. This is your condition 1. Okay. Then we are giving the curly braces here, like something will be executed. For example, if statement get executed. Okay. Bracket close. After that you have else. Okay, which we have seen in previous example. Here we have to give the keyword as else if. Again inside the bracket we are giving the condition 2. देखिए आप यहाँ पे मेरे सेकंड कंडीशन है. अगेन इट विल चेक कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. सो वी आर स्पेसिफाइंग समथिंग एंड वी कैन से सेकंड इफ स्टेटमेंट get executed. Okay. यहाँ पे मान लीजिए कंडीशन 1 फेल होती है, देन इट विल कम टू दिस पार्ट. यहाँ पे भी एक मैंने कंडीशन दी है, कंडीशन नंबर 2. अगर वो स्पेसिफाई है और वो ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा. मान लीजिए अगर यहाँ पर भी कंडीशन फेल है, सो अगेन वी आर गिविंग इट थर्ड कंडीशन else if. Here we are giving the condition number 3. Okay, condition number 3. Again the curly braces. Here what we can say, the third condition is executed. Okay, so what is the change here from the previous two is, here we are working with more than one condition. This is your condition number 1, this is your condition number 2, this is your condition number 3, this is your condition number 3. Okay, now we will look in the Eclipse about this. Again here new class, here I am writing else if condition. Okay, else if condition. So we have created class. So as usual, so we have created the main method.
we have created the main method. Again, here I am writing one integer as int a is equal to, मान लीजिए 30 मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ उसको. Okay, we are saying here integer value a is equal to 30. Okay, I am giving one condition. If, okay, I am giving one condition as the next line. If, here in bracket we are specifying one condition. I am saying a is equal to 20. Okay, I will show you the meaning also, don't worry. Okay, here I am typing as a value is 20. Okay, that's what I am typing here and here. Now I will show you the meaning of this equal and double equal. Does anybody know इसका meaning क्या होता है? What is equal and double equal? इक्वल वैल्यू पुट करता है, डबल इक्वल कंपैरिजन. Yes, equal is for assigning. Okay, the value 30 is assigned to a is not assigned to 30. a वेरिएबल को हमने एक वैल्यू असाइन की है, that is 30, which is given by equal to sign just one time. If we are using 2 times equal, it should be the comparison. Okay, it should be the comparison. Okay, now if you are saying कि सर अगर मैं एक देता हूँ तो क्या होता है, you will get an error. It will show you like we cannot convert from it into boolean. अब यहाँ पे ये जो टाइप हुआ है इसका मीनिंग होता है कि मैं a को 20 बोल रहा हूँ, तो मुझे इस ब्रैकेट का जो आउटपुट चाहिए वो दो ही कंडीशन में चाहिए, लाइक इट शुड बी ट्रू और फॉल्स. a इज इक्वल टू 20 इसका कुछ मतलब नहीं बनता है, ये सिंपल क्या है, असाइंड है. ओके, मुझे ट्रू और फॉल्स चाहिए तो मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा. तो इसका जब मैं कंपेयर करूंगा तो इसका मीनिंग होगा आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स. व्हाट इट मीन. ओके ओके, अब ये सिंपल इफ कंडीशन हुआ, यहाँ पे a मतलब 30 इज इक्वल टू 20 ट्रू है या फॉल्स है. इज इट ट्रू और फॉल्स? 30 इज इक्वल टू 20, इनका कंपैरिजन करेंगे तो ये ट्रू होता है कि फॉल्स? फॉल्स. सो आपको यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आएगा इस केस में. ओके, बट वी आर सीइंग दी एल्स इफ. सो इफ पार्ट अगर आपका फेल होता है, सो वी आर गेटिंग इट एज एल्स इफ. अगेन वी आर गिविंग वन मोर कंडीशन. So here I am giving condition as equal to 30. Okay, then I am printing as a value is 30. Okay, now this time the condition is true, so I am expecting this is to be printed. Okay, no worries. Still I am guessing कि ये भी condition मान लीजिए fail है because of the value change. Okay, so again I can write the remaining again one more condition, else if the condition is a is equal to 40. Okay, next curly bracket open, here I want to type a value is 40. Okay, and at the end if nothing is true. Okay, मान लीजिए आपकी सभी कंडीशन फेल होते हैं तो एट द एंड यू हैव टू स्पेसिफाई वन एल्स स्टेटमेंट. ओके, सिंपली उसको क्या होती है, बॉडी. दैट मींस हियर आई कैन राइट एज अ एल्स स्टेटमेंट गेट executed. Okay, this is my code. Okay, written. Now here what I wanted to check is I will check the value of a is equal to 30 with my multiple conditions. देखिए फर्स्ट कंडीशन लाइन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, a, that means here I will write like the a value we have specified 30, is it equal to 20. यह है फॉल्स आपका, तो मान लीजिए आपका ये स्टेटमेंट नहीं होना है प्रिंट. अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि a दैट मीन्स 30 इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रू होता है. तो व्हेन इट इज हैविंग द तो व्हेन हैविंग द ट्रू कंडीशन, मतलब कंडीशन आपकी ट्रू बनती है, तो बस वो इतना ही स्पेसिफाई, इतना ही जो एग्जीक्यूशन है वो करेगा. इट विल नॉट गो बियॉन्ड दैट. ओके, नाउ वी विल ट्राई. अभी हमने क्या किया, 30
ए किया है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग द लाइन नंबर 13 शुड बी गेट प्रिंटेड. ओके, सी ए वैल्यू इज 30. ए वैल्यू इज 30 बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, तो इसके बाद वो देखेगा नहीं. ओके, मान लीजिए आई एम सेइंग इट एज इंस्टेड ऑफ 30 आई एम सेइंग इज 40. सो व्हाट इट विल हैपन, दिस विल चेक कि 40 30 के इक्वल है या नहीं. इफ इट इज नॉट, अगेन दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स, सो इट विल गो टू द नेक्स्ट इफ एल्स इफ, लाइन नंबर 15. यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, देन इट विल प्रिंट वॉट एवर वी हैव गिवन इन दिस एल्स बॉडी, एल्स इफ बॉडी. ये बॉडी में जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा. सो अगेन विल ट्राई दिस. दैट इज ए वैल्यू इज 40. देखिए ये प्रिंट हुआ है आपका मैसेज. मान लीजिए आपकी ये जो वैल्यू है इट इज समथिंग ऑड. ओके, नाउ फर्स्ट इफ स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे फॉल्स बनता है, सेकंड भी फॉल्स बनता है, और मान लीजिए ये भी फॉल्स बनता है. सो एट द लास्ट इट विल गो टू एल्स, और एल्स में जो भी था वो प्रिंट होगा. ओके, एल्स स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड. सो यहाँ पे हमने क्या देखिए, कंडीशन मल्टीपल है यहाँ पे, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3. एनी डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट है? No. वेरी गुड. सो नेक्स्ट आपका हुआ 3 टाइप देख लिए हमने. दैट इज व्हाट, इफ स्टेटमेंट, if else, else if. Now last one is the nested if. Okay, very interesting one. This one is what? Okay, if else you can try, I will give you the example for this. Okay, nested if. Okay, so with nested if, what is the difference? Here I can simply say in one word, condition, sorry, condition in condition. Okay, यहाँ पे क्या होता है देखिए, we have one condition which we are specifying with the, which we are specifying with if keyword, right? if मान लीजिए मेरे पास कोई कंडीशन है, सॉरी, कंडीशन 1. ओके, नाउ आई एम गिविंग इट एज फर्स्ट इफ. ओके, अब इस कंडीशन के अंदर भी मेरे पास एक और कंडीशन मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ. इफ कंडीशन 2, इफ कंडीशन 2, अगर ये कंडीशन 2 ट्रू है तो मुझे क्या करना है, स्टेटमेंट प्रिंट करना है कि सेकंड इफ एग्जीक्यूटेड. ओके, और यहाँ पे भी क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इफ एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है ना, अगर ये ट्रू है तो ही इस ब्रैकेट में जाएगा. बट यहाँ पे मैंने और एक कंडीशन दी है, इफ कंडीशन 2, यहाँ पे कंडीशन 2 एग्जीक्यूट होना चाहिए. मान लीजिए ओके, अगर कंडीशन 2 फेल होता है, कंडीशन 2 फेल होता है तो इसका एल्स पार्ट होगा, इसका एल्स पार्ट होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, एल्स ऑफ सेकंड कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड. ओके, देखिए मान लीजिए आपका इफ कंडीशन जो पहला कंडीशन है वो ट्रू है, तो वो इस ब्रैकेट में एंटर होगा, राइट? यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट मान लीजिए वो एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो उसको और एक इफ दिखा है, वी आर गेटिंग अगेन वन मोर कंडीशन, दैट इज कंडीशन नंबर 2. अगर ये ट्रू है तो वो इस ब्रैकेट में एंटर होगा और वो यहाँ से तो यहाँ तक जो भी आपका ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट करेगा. मान लीजिए ये कंडीशन नंबर 2 फॉल्स होती है तो वो यहाँ से इसको स्किप कर देगा, इट विल डायरेक्टली जंप टू द एल्स पार्ट. और एल्स पार्ट में क्या है, एल्स ऑफ द सेकंड कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड.
Okay, now again when this bracket close, ये bracket close किस चीज का है, इस if का है, first if का। मान लीजिए आपकी पहली कंडीशन ही फॉल्स होती है, आपकी पहली कंडीशन ही फॉल्स होती है, तो उसका एल्स होगा that will this, here I can say the first else is executed। ओके, अब देखिए अगर आपका ये कंडीशन होता है फॉल्स, तो वो डायरेक्टली ये सब स्किप करेगा, यहाँ से तो यहाँ तक। इट विल डायरेक्टली कम टू दिस एल्स एंड इट विल एग्जीक्यूट द एल्स पार्ट ऑफ द फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोस्त, यहाँ पे कंडीशन मल्टीपल्स है बट कंडीशन में कंडीशन नहीं है। Here we are getting condition, inside that condition again we are getting one more condition। So can you imagine any example of this, जहाँ पे आपको दो कंडीशन होते हैं, एटलीस्ट दो। Yes dear, am I audible? Am I audible or not? Number of days in week. Yeah, okay. No, that will be not in condition. I will tell you how it will be. Again, any guess? Probability. Probability, okay. What is probability, dost? Either blue color or red color. Okay. In the one of the box, either blue color Okay. or red color is choose. Okay, we'll take very simple example, okay, which you will understand। अब ये जो आपने बताया, this is from the apti, right? We are getting multiple questions like this in the aptitude। जो भी आपके apti के एग्जाम होंगे ना, वहाँ पे मिलेंगे आपको। पेयर ऑफ सॉक्स रहेंगे या पेयर ऑफ balls which are having same color, तो what is the probability of getting just one get selected out of the total? Okay, so वो it's a complicated part, get a simple, very simple। Okay, I'm specifying a string that is username, sorry username, एक यूजरनेम है और उसके वैल्यू मान लीजिए इन डबल कोट वी एम स्पेसिफाइंग एज ABC। ओके ओके, अगेन a string password I am specifying it as XYZ 1 2 3 मान लीजिए that is your password। ओके, दिस इज योर पासवर्ड, वेरी सिंपल। मैंने अभी बस दो वेरिएबल स्पेसिफाई किए हैं, यूजर नेम, सेकंड इज अ पासवर्ड, और उनकी वैल्यू स्पेसिफाई की है। ओके, नाउ फर्स्ट इफ, जैसे आपको लॉगिन करना है तो आप क्या करोगे, पहले इनपुट करोगे यूजर नेम। सो यूजर नेम इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से, इट शुड बी ABC, it should be ABC, right? Okay, again I will saying it's equal to, I will show you, I will tell you what is the error we are getting। Okay, so here what I am expecting to print is the username is correct, right? अगर आपका यूजर नेम ये है तो आपका यूजर नेम करेक्ट है, ऐसा मुझे मैसेज आएगा। ओके, इन दिस। Okay, again in that I want one more if condition। if, अब next step मेरा क्या है, पासवर्ड है, right? Next step is what, my password। so condition number 2 is what, password is equal to मान लीजिए whatever the value XYZ 1 2 3। okay, we are getting error, I will tell you what error we are getting, no issue। now if this password is correct, I am getting it as here, getting it as password is correct and user is logged in, है ना? दोनों चीजें करेक्ट है तो क्या होगा, यूजर क्या होगा, लॉग इन होगा, राइट?
मान लीजिए कि ये इफ पासवर्ड आपका रॉन्ग है, so we are getting in what? Else. Else what we should get the message as password is, sorry, password is incorrect. We should get, right, password should, it is incorrect. देखिए ये if की बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक, राइट। if की बॉडी यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रही है, और इसमें मैंने अगेन वन मोर कंडीशन पुट की है। अगर यूजर नेम ही आपका गलत है, यूजर नेम ही आपका गलत है, सॉरी, so we should be getting one message as the username is wrong. Okay, ये मुझे चाहिए. This is the syntax. Now we are getting the error here because see, if you hover over, the ABC cannot be resolved to a variable. अब ये इसको variable मान रहा है. So if I want, I can give specify in the double quote. Okay. Then it will not consider it as a variable. It will consider it as a value. Okay. Now here username is ABC. Okay, जो है actual दिया है. Password is also correct. So what we are expecting here in console? What we are expecting? Can anyone tell me? Password is correct and user is logged in. पासवर्ड इज करेक्ट. देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. इफ की कंडीशन सेटिस्फाई होगी है, यूजर नेम इज एबीसी एज लाइन नंबर 7, तो वो इसमें एंटर होगा. यहाँ पर उसको फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट करना है डायरेक्टली, यूजर नेम इज करेक्ट. ओके, देन नेक्स्ट लाइन नंबर 12 में जाएगा, वहां पे भी एक उसको और कंडीशन मिल रही है. हियर वी आर चेकिंग द पासवर्ड वैल्यू शुड बी एग्जैक्टली XYZ 1 2 3. अगर ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है आपके लाइन नंबर 8 से, तो इट विल शो यू द next syntax, or sorry, next instruction like password is correct and user is login. Okay, we'll try. We are getting first statement this simple, username is correct. Then again ये वहां पे एक कंडीशन चेक कर रहे हैं हम, पासवर्ड करेक्ट है, तो वी आर गेटिंग अगेन पासवर्ड इज करेक्ट एंड यूजर इज लॉग्ड इन. ओके, मान लीजिए कि आपका यूजर नेम ही आपने गलत दे दिया. कंडीशन में क्या लिखा है मैंने, यूजर नेम शुड बी ABC1. अब यूजर नेम ही गलत है, तो वो यहाँ से ये जो बॉडी है वहां देखेगा ही नहीं. वो इट विल नॉट एंटर इनटू दिस लूप और एंटर इनटू दिस बॉडी. इट विल डायरेक्टली गो टू द एल्स पार्ट एंड इट विल शो यू यूजर नेम इज रॉन्ग. ओके, वी विल ट्राई दिस आल्सो. द यूजर नेम इज रॉन्ग. ओके, मान लीजिए आपका यूजर नेम सही है, यूजर नेम इज राइट एंड यू आर जस्ट चेंजिंग द पासवर्ड समथिंग लाइक दिस. आपने पासवर्ड कुछ गलत टाइप कर दिया. सो व्हाट विल गेट हियर, यहाँ पे क्या मिलना चाहिए आपको इन कंसोल? व्हाट यू विल गेट? Password is incorrect. Okay, again any guess? Username is correct and password is incorrect. Very good. It will enter into this, right? It will enter into this. The first instruction is what? Print something. That is user is correct. अगर वो यहाँ पर जाएगा लाइन नंबर 12 में, चेक करेगा पासवर्ड सही है. If it is not true, it will skip this part. It will go to the else part. यहाँ पे क्या करेगा? प्रिंट करेगा पासवर्ड is incorrect. Simply will try this also. Username is correct, but password is wrong. So password is incorrect. We are getting the two statement. Any doubt here? Any doubt here? Okay. Now we can say assignment. Okay, आपको फर्स्ट असाइनमेंट करना है और सिंपल इफ स्टेटमेंट. आप कोई भी लॉजिक लगाइए, इफ स्टेटमेंट के लिए प्रिंट कीजिए. सेकंड, यू शुड बी इफ
और एल्स। इसका भी सिंपल आप कुछ भी वेरिएबल लेके उसको कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड इज व्हाट द एल्स इफ। हियर you should be writing one example for the weekdays. Okay. आपके जो वीकडेज है ना, okay, that means either it should be Monday or Tuesday or Wednesday or Thursday, है ना। अगर ये वैल्यू नहीं तो क्या करेगा, वो नेक्स्ट लूप को जाएगा, मतलब नेक्स्ट कंडीशन के लिए देखेगा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो यहाँ पे आपको कितने कंडीशन देने पड़ेंगे, 7 conditions if you are trying to compare the 7 values. Okay, and here for this nested if, you can consider simple the marking system. Okay. Okay, just hold for 1 minute, okay guys. Yeah, can you hear me? Yes, Yes. sir. Yeah, so we are assigned. Okay, here if for nested if we can just consider the marking system. Okay, you know the, for example, what is the first class. Okay, for example, first class is up to from 60 to 75, right? मान लीजिए, no, sorry, above 75. Okay, 75 and first class with a distinction, right? Okay, what is second class? I think it is from 60 to 75, right? Okay, and just get like third class less than 60, less than 60, sorry. So here use the nested if for printing this result. Okay, take any marks of the student and try to put this condition. For else if, give 7 conditions. Okay, make when variable string day or current day is equal to, you just type Monday and give the 7 conditions. So if you have given the value as Monday, you will get the day is Monday printed. Okay, if you are changing it to Thursday, it will check up to this Wednesday condition. The 4th condition will be true, it will just print this current day is Thursday, like this. Got it? इसमें किसी को कोई डाउट है in this assignment? Yes dear, any doubt for this all conditional statement? इसमें किसी को कोई डाउट है? सर इंटरव्यू के टाइम पे भी इसके ऊपर मतलब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं?
they will give one scenario. Okay, they will give a scenario. For example, login scenario. They are saying you want to write a code for the login, so give your logic. So लॉजिक मतलब दे विल नॉट आस्क यू कि मुझे कंट्रोल स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ मैं कि कंडीशन स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ. दे विल जस्ट आस्क यू गिव योर लॉजिक. तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करने हैं यहाँ पे. और फ्लो स्टेटमेंट का भी वही मीनिंग होता है सेम. फ्लो कंट्रोल मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल आपका फ्लो होता है लाइन बाय लाइन. ओके, जीआरए विल ट्राई टू एग्जीक्यूट योर कोड लाइन बाय लाइन. अगर यहाँ पे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो ये फ्लो ब्रेक कर देगा और वो डायरेक्टली लाइन नंबर 19 पे जंप करेगा अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो. सो इट इज ट्राइंग टू फ्लो कंट्रोल द फ्लो. ये आपकी कंडीशन ये स्टेटमेंट क्या करते हैं, फ्लो को कंट्रोल करते हैं कि आपका 10 से 11 में जाना चाहिए कि 10 से डायरेक्टली 19 पे जंप होना है. सो इन इंटरव्यू दे विल नॉट गिव यू इफ यू आर लाइक फ्रेशर और आपको बस आपने कहा कि मुझे जावा बेसिक्स पता है तो दे कैन डायरेक्टली आस्क यू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट. इन दिस यू कैन स्पेसिफाई दीज कंडीशंस. ओके, आपको ये बता सकते हैं वर्बली. बट अगर वो आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ सिनेरियो पूछ रहे हैं विच नीड सम कंडीशनल लॉजिक तो आपको इसमें से अप्रोप्रिएट कुछ टाइप सिलेक्ट करके वहां पे लिखना पड़ेगा. को डन. एनी डाउट सर? बोलिए. सर इसमें इनपुट आउटपुट कैसे करेंगे? सॉरी आई एम नॉट गेटिंग व्हाट इज इनपुट आउटपुट यू आर आस्किंग. सर मतलब सिर्फ मैनुअली मार्क्स एंटर करके फिर कंडीशंस देके वो कंपाइलर में शो करेगा रिजल्ट? या मैनुअल मार्क्स जो हम करेंगे ना एंटर करना है आपको. इट इज वन स्कैनर क्लास, वो हम पढ़ाऊंगा मैं भी. जैसे आपको यहाँ पे एंटर करना है मार्क्स राइट इन कंसोल. यू वांट टू एंटर सम मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देन यू शुड गेट द आउटपुट राइट. यू आर आस्किंग राइट. वो मैं स्कैनर क्लास बताऊंगा. उसके लिए कुछ कोड आपको फाइल्स जारा फाइल इंपोर्ट करनी पड़ती है ना फॉर द स्कैनर क्लास. तो वो बताऊंगा. अभी मैं एकदम सिंपल ले रहा हूँ सिंपल. नेक्स्ट जब हम एक्चुअली जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोडिंग स्टार्ट करेंगे ना तब मैं दिखाऊंगा व्हाट इज स्कैनर क्लास एंड हाउ वी आर प्रिंटिंग दी मैसेजेस. ओके, कि यूजर डिफाइंड वैल्यू पे आपको प्रिंट होना चाहिए. अभी यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर रहे हो आपके मार्क्स या जो भी वेरिएबल. आपको अगर आउटपुट पे स्पेसिफाई करना है आपको कुछ मैसेज यहाँ पे शो होगा प्लीज एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट. आपने मार्क्स एंटर किया 40 तो उसकी बिहाफ पे आपको आउटपुट दिखेगा राइट. यू आर आस्किंग. यस. So that I will tell you. It's a scanner class. Okay. We are going step by step. मैं डायरेक्टली अभी यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस पैकेज इंपोर्ट करके दिखाऊंगा तो इट विल बी डिफिकल्ट. सो हियर वी आर जस्ट गोइंग वन बाय वन. Some basic concept from Java, then directly we are going to do the coding for the project like. Okay. कोई डाउट है किसी में इसमें किसी को और? सर हाँ बोलिए. एल्स इफ और नेस्टेड इफ में दोनों में मोर कंडीशन होगी तब जाएंगे ना. एल्स इफ और नेस्टेड इफ में देखिए कंडीशन यहाँ पे वन मोर देन वन है ये तो श्योर है डेफिनेटली. यहाँ पे हम कंडीशन 1 और 2 के साथ कर रहे हैं और यहाँ पे भी मोर देन वन कंडीशन है. बट हियर इन एल्स इफ द पैटर्न इज वेरी सिंपल. आपको क्या है इफ कंडीशन के बाद ही क्या मिल रहा है अगेन कंडीशन 1. इस कंडीशन के इस बॉडी के अंदर अगर कोई कंडीशन नहीं है ना. मान लो ये फेल होती है तो सेकंड एल्स इफ पे जाएगा. ये सेकंड कंडीशन चेक करेगा. इसके अंदर अगेन कोई भी कंडीशन नहीं है ना. मतलब ऑल कंडीशंस आर सेपरेटली मेंशन्ड. बट हियर इन नेस्टेड इफ वी हैव कंडीशन नंबर 1. उसके बॉडी के अंदर मुझे और एक कंडीशन मिल रहा है दिस वन कंडीशन नंबर 2. इट इज नॉट सेपरेटली मेंशन्ड. तो मैंने यहाँ पे सिंपल आपको एक वर्ड में बताया ना कंडीशन इन कंडीशन. और यहाँ पे एल्स इफ में आपको सेपरेट कंडीशन होंगे. डेफिनेटली यू विल गेट मोर देन वन कंडीशन. बट उसका पैटर्न भी समझ लीजिए. यहाँ आपको आपको सेपरेट कंडीशन मिल रही है. कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 4 जो भी होंगे आपके. बट इन नेस्टेड इफ वी आर गेटिंग कंडीशन इन कंडीशन. आपकी एक कंडीशन है उसके बॉडी में आपको अगेन एक कंडीशन मिल रहा है दैट इज नंबर कंडीशन नंबर 2. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला आपको कंडीशन था कि आपका यूजर नेम करेक्ट चाहिए. ओके, यूजर नेम करेक्ट होने के बाद आपकी सेकंड कंडीशन ये भी बन रही कि आपका पासवर्ड भी करेक्ट चाहिए आपको है ना. तो कंडीशन में कंडीशन आ गई. यस सर. दैट इज द डिफरेंस. ओके. ओके.
I hope there is no more doubt, right, for this session. Okay, so we'll stop here. Okay, thank you.